Greeting to all. Myself Amit Kumar Shukla. I'm a lecturer in mechanical engineering at Government Polytechnic Bargarh Chitrakoot. Right now, we will study the second lecture of refrigeration and air conditioning. That will be useful for the student of mechanical engineering diploma students for second year. This subject come into the fourth semester of mechanical engineering diploma students. Before to this lecture, we already earlier discussed some of the syllabus content, which are like this. So, fundamental of refrigeration. इन फंडामेंटल ऑफ रेफ्रिजरेशन में हमने रेफ्रिजरेशन का परिचय देख लिया था। एयर कंडीशनिंग क्या होती है, क्या हमारा यूज़फुल है, एयर कंडीशनिंग किस तरह से करते हैं। उसके बाद रेफ्रिजरेशन की आवश्यकता कहाँ पड़ती है, क्या उसकी ज़रूरत है, मीनिंग ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, जो हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। उसके बाद यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन, हमारी जो रेफ्रिजरेशन हम करते हैं उसका यूनिट इकाई क्या होगी, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन होती है, उसको कैसे डिफाइन करते हैं ये भी बता दिया गया था पहले लेक्चर में। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस से हम क्या समझते हैं, कैसे उस पर न्यूमेरिकल करते हैं, इससे पहले वो भी बताया गया है। नाउ अब हम ये देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट टर्म है डिफरेंस बिटवीन द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड द एफिशिएंसी। सो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी में बेसिकली डिफरेंस बहुत ही कंक्लूडेड है कि जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है वो हाई ग्रेड एनर्जी को यूज़ करता है और जो हमारा एफिशिएंसी है वो लो ग्रेड एनर्जी को यूज़ करता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ऊष्मा और कार्य में हाई ग्रेड एनर्जी जो है हमारा वर्क है और लो ग्रेड एनर्जी हीट है। So in efficiency, we are using heat as a source of power, and we convert into useful work or like that some power generation and all. So in that way, हमारी लो ग्रेड एनर्जी यूज होती है और पावर को कन्वर्ट करती है, मतलब उस ऊष्मा को कन्वर्ट करती है हाई ग्रेड एनर्जी में। और हमारी जो उसकी एफिशिएंसी होती है उस मतलब उसमें जो हमारा आउटपुट अपॉन इनपुट होता है वो एफिशिएंसी होती है और हमेशा वो कम होती है, मतलब एक से कम होती है। इस तरह से अगर देखा जाए तो हमारी एफिशिएंसी जो कि यूज़ होती है पावर प्लांट्स वगैरह में, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन में, डीजल साइकिल्स में, ये एफिशिएंसी हमारी बेसिकली कंसेप्ट को यूज़ करती है एनर्जी कन्वर्जन को, एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए। जबकि सीओपी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो कि हम यूज़ करेंगे रेफ्रिजरेशन और हीट इंजन में, यहाँ पर हम हाई ग्रेड ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं। हाई ग्रेड ऑफ एनर्जी मतलब अगर हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमें देखना है, किसी पर्टिकुलर स्पेस को अगर हमें कूल करना है, उसकी हीट को एक्सट्रैक्ट करके सराउंडिंग में स्पेल आउट करना है, तो उसके लिए हमें कुछ एनर्जी की ज़रूरत होगी जो हम किस माध्यम में देते हैं, वर्क के माध्यम से। सो यहाँ पर हाई ग्रेड ऑफ एनर्जी यूज होती है एंड दिस इज यूज फॉर द ट्रांसफर ऑफ heat, means this concept COP will be used for the transfer of energy, whereas the efficiency will be connect with the transmission or conversion of energy. So in this way we can say the difference between the COP and efficiency. Efficiency will always be less than 1, means 100% से हमेशा कम रहेगी, और COP may more than 1. Okay, so in this way COP and efficiency are two different things which can be uh, understand by this concept of energy transfer and energy conversion. Now the method of refrigeration, there are different methods which can be used for the refrigeration purpose. So further, the reverse Carnot cycle and its representation of PV and TS diagram. So reverse Carnot cycle is just opposite of the Carnot cycle. As we are studying in the uh, thermal engineering, the Carnot cycle, in same manner the cycle is reversed and that will be called as the reverse Carnot cycle. The efficiency of the Carnot cycle is maximum for that respect, and the same way for the refrigeration and heat pump what we are using the reverse Carnot cycle, there the efficiency is maximum in that cases. So now reverse Carnot cycle को हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से reverse Carnot cycle हमारा काम करता है, क्या क्या इसमें प्रोसेस होते हैं, अलग अलग प्रोसेस में क्या हमारा
पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होती है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना है, कि एंट्रोपी कांस्टेंट होनी है, हीट एडिशन है कि हीट रिजेक्शन है, तो इसको हम आगे देखेंगे. So now, what is the reversed Carnot cycle? So in the refrigeration system, the Carnot cycle consider as a reversed Carnot cycle. Means जो हमारा refrigeration system है उसमें हम जो भी cycle use करेंगे वो हमारी reverse Carnot cycle है. We know that the heat engine working on the Carnot cycle has the highest efficiency. Heat engine जो हमारा होता है वो Carnot cycle पे जो काम करता है उसकी maximum efficiency होती है. उसी तरह से हमारा refrigeration और heat pump में जो हमारा process use होगा that is the reverse Carnot cycle और इसकी efficiency भी maximum होगी. We also know that it is not possible to make an engine working on the Carnot cycle. As we all know that this is the ideal cycle and which is very standardized one and which is hypothetical. It is not actual. Similarly, it is not possible to make the refrigerating machine working on the reverse Carnot cycle, and however it is used for the ultimate standard of comparisons. A reverse Carnot cycle using the air as a working medium or a refrigerant means in the reverse Carnot cycle we are consider the air as a working medium, and this diagram will be his diagram is will be showing on the PV and TS diagram, and this is how the diagram will be look. So here we have a diagram, that is the PV diagram for the reverse Carnot cycle, and this is the TS diagram for the reverse Carnot cycle. Let us conclude this diagram with a easily understanding of the process. So in this diagram 1, here what we have the initial condition 1 and 2 where the जो हमारा प्रेशर है, दाब है, वो पॉइंट 1 पर वो P1 है और 2 पर P2 है. जो हमारा पहला प्रोसेस होगा वो कहलाएगा हमारा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन. सो जो भी हमारा वर्किंग फ्लूइड है, जो यहाँ पर एयर है, वो एयर को हम कंप्रेस करेंगे आइसेंट्रोपिकली, और कंप्रेस होने के बाद हमारा P1 से प्रेशर P1 से P2 हो जाता है और टेम्परेचर T1 से T2 हो जाता है. इस तरह से हमारा जो V1 वॉल्यूम जो है वो कंप्रेस कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, वो V1 से V2 हो जाता है. Then the next process, as we know that it is the asymptotic process, so heat addition or a rejection will not possible as it is compression. So there the no interaction of heat. So the next process is isothermal compression. Isothermal means the temperature will be constant. So the whatever the temperature of point 2 that will remain same as the point 3. So here the point 2 temperature and point 3 temperature are same. And the next thing we are getting that the temperature are same, but as the heat, it is the process where the heat is rejected to the surrounding, the refrigeration system. So right now the heat will take place, and that is equal to the T into S delta S, the entropy changes. So entropy changes is S2 minus S3 and multiplied with temperature T2, that will be the heat expelled to the surroundings. Now in the same way we will come to the next process, that is the process 3 to 4. Okay, this is the isentropic expansion. Isentropic expansion means at the point 3 the pressure is P3, temperature is T3 and the volume is V3. But now at the point of 4 isentropic expansion, the heat will not take place. So the temperature of point 4 will be the T4 and the pressure of point 4 P4. As the volume increases, expansion take place, volume increase होगा, वो V3 से हमारा P4 हो जाएगा. इसको हम नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं. एज हियर वॉल्यूम हमारा V3 से V4 हो जाएगा, और ये हमारा क्या है, एसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है, इसलिए इसमें कोई हीट एडिशन हीट रिजेक्शन कोई टेक प्लेस नहीं करेगा. So simply in that process the entropy of point 3 and entropy of point 4 will be remain same. So entropy at the point 3 S3 is equal to S4. So this is how the process 3 to 4 completed. Now the process 4 to 1, it is gas expand isothermally when the temperature will be constant, mean the T to T4 is equal to T1. So right now T4 is equal to T1, the pressure P4 and the pressure at the end of the process is P1. So in this way the entropy changes, volume changes from the V4 to V1, as well as the entropy changes from the S4 to S1. As we know that two asymptotic process, so S1 is equal to S2 and the S3 is equal to S4, as the entropy remains same for these two asymptotic expansion and the compression process. So right now in the process what we are earlier to this, here
heat rejection. For this we are getting to know that process q heat rejection to the surrounding q23 is equal to T2 bracket multiplied with S2 minus S3. In the same way, what we are getting for the 4 to 1 is that 4 to 1 T1 or T4, whatever you are considered, T1 is multiplied with entropy difference S1 minus S4, that is equal to the S2 minus S3. So in the same way, here the T1 Q4 to 1 is equal to T1 S2 minus S3. As we know that the work input will always equal to the difference of these three. So q4 to 1 minus q2 to 3, that is equal to t1 minus t2 and in bracket s2 minus s3, means temperature difference and entropy difference, product of the temperature difference and entropy difference give us the work network. So whatever the what we are called the efficiency of the Carnot cycle is that efficiency is equal to output upon input. So what we are getting that as a output is equal to output is Q23 heat rejected to the surrounding. Okay, so heat rejected to the surrounding is what? Sorry, heat rejected to the surrounding heat. Sorry, evaporation. Actually, our output is desired output is refrigeration effect, that will become in here heat addition. So heat addition is what? T2, sorry, here, uh, just a minute. So okay, as the efficiency of the reverse Carnot cycle is equal to the heat removed from the cold reservoir and the amount of work input. So heat removed from the cold reservoir is nothing other than the T2 S2 minus S3. In the same way, the amount of work input, that is equal to the T1 minus T2 and S2 minus S3, product of these two. So what we are getting that S2 minus S3 is cancelled out from the above and lower part of the efficiency, and we will ultimately get that T2 upon T1 minus T2. So this is our the efficiency. This will be the efficiency of our system. Okay.